आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 217 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 217 क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? अ 20-year-old woman gravid 3 para 0 abortus 2 has experienced 2 second trimester losses characterized by painless cervical dilation and rupture of the membrane followed by expulsion of grossly immature non-viable fetuses. Which one of the following is the primary management intervention in this pregnancy? तो पूछ रहे हैं 20-year female, ठीक है ना, ग्रेविडा थ्री पैरा जीरो एबॉर्शन टू हैज 2 second trimester losses, had 2 second trimester losses characterized by painless cervical dilatation, एक मिनट, characterized by painless cervical dilatation, ठीक है ना, and rupture of membrane followed by expulsion of grossly immature non-viable fetus, followed by expulsion of grossly immature non-viable fetus, ठीक है ना. Which one of the following is primary management intervention? intervention क्या होगी? ऑप्शन 1 प्रोजेस्टेशनल एजेंट, ऑप्शन 2 बेड रेस्ट, ऑप्शन 3 टोकोलिटिक एजेंट, ऑप्शन 4 सर्वाइकल सर्कलेज, या ऑप्शन 5 मायोमेक्टोमी. फिर से देखिए, 20-year female with G3P0A2 had 2 second trimester losses characterized by painless cervical dilatation, rupture of membrane followed by expulsion of grossly immature non-viable fetus. Primary management intervention is prostaglandin agent, bed rest, tocolytic agent, cervical circlage, or myomectomy. And the right answer is D, cervical circlage. Right answer is D, cervical circlage. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 218 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 218. A 37-year-old gravida 2 para 1 abortus 1 reports she lost 2 pregnancies at 19 and 21 week gestation. She denies any systemic disease and states she is in good health. Which one of the following is least likely to be the cause of her pregnancy loss? Well, 37-year female gravida 2 para 1 abortion 1 reports she lost 2 pregnancies at 19 and 21 week. ठीक है. She denies any systemic disease. There is no systemic disease and states she is in good health. ठीक है. ये तो छोड़ दीजिए. Which one of the following is least likely to be the cause of her pregnancy loss? तो least likely cause of pregnancy loss. Option 1 incompetent cervix, option 1 incompetent cervix, option 2 uterine abnormalities, option 2 uterine abnormalities, option 3 fetal infection, option 3 fetal infection, option 4 fetal hydrops, option 4 fetal hydrops, या option 5 fetal cytogenetic abnormality. फिर से देखिए, 37-year female with G2P1A1
lost to pregnancy at 19 and 21 week. No systemic disease. Least likely cause of pregnancy losses: incompetent cervix, uterine abnormality, fetal infection, fetal hydrops, or fetal cytogenetic abnormality. And the right answer is E, fetal cytogenetic abnormality. fetal cytogenetic abnormality सबसे least likely cause होती है. क्वेश्चन 219 देखेंगे. क्वेश्चन 219, which one of the following conditions most prevalent risk factor for preeclampsia? तो most prevalent risk factor for preeclampsia, most prevalent risk factor for preeclampsia. Option 1, diabetes mellitus. Option 1, diabetes mellitus. Option 2, chronic renal disease. Option 2, chronic renal disease. Option 3, nulliparity. Option 3, nulliparity. Option 4, multiple gestation. Option 4, multiple gestation. Option 5, high rate H mole. Option 5, H mole. देखिए मोस्ट प्रिवेलेंट रिस्क फैक्टर फॉर प्रीक्लेम्सिया: डायबिटिस मेलिटस, क्रॉनिक रेनल डिजीज, नल्लीपैरिटी, मल्टीपल जेस्टेशन, एच मोल. एंड द राइट आंसर इज सी, नल्लीपैरिटी. क्वेश्चन 220 देखेंगे. क्वेश्चन 220 देंगे. द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर प्रीक्लेम्सिया इज definitive treatment of preeclampsia. Definitive treatment of preeclampsia. Option 1, bed rest in left lateral position. Bed rest in left lateral position. Option 2, pregnancy termination. Option 3, high protein diet. Option 4, daily dose of aspirin. Doses. Option 5, magnesium sulfate. फिर देखिए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ प्रीक्लेम्सिया: बेड रेस्ट इन लेफ्ट लैटरल पोजीशन, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन, हाई प्रोटीन डाइट, डेली एस्पिरिन डोजेस या मैग्नीशियम सल्फेट. एंड द राइट आंसर इज बी, दैट इज प्रेगनेंसी टर्मिनेशन. क्वेश्चन 221 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 221 क्या पूछे? Which of the following contraceptive method should be delayed until 6 to 8 week postpartum? तो contraceptive method delayed till 6 to 8 week postpartum. 6 to 8 week postpartum कौन सी होती है? ऑप्शन 1, कॉन्डोम. ऑप्शन 2, medroxyprogesterone acetate. Option 2, medroxyprogesterone acetate. Option 3, spermicidal agent. Option 3, spermicidal agent. या ऑप्शन 4, डायफ्राम. फिर से देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डिले टिल 6 to 8 week ऑफ पोस्टपार्टम: कॉन्डोम, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसिटेट, स्पर्मिडाइजल एजेंट या फिर डायफ्राम. एंड द राइट आंसर इज डी, डायफ्राम. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 222 देखेंगे. क्वेश्चन 222 क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज? तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मोस्ट कॉमन कॉज of postpartum hemorrhage. Option 1, uterine atony. Option 2, retained placenta. Option 2, retained placenta.
retained placenta. Option 3, एक मिनट, perineal laceration. Option 3, perineal laceration. Option 4, DIC. Option 4, DIC. Option 5, uterine rupture. Option 5, uterine rupture. फिर से देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज, यूट्राइन एटोनी, रिटेन प्लेसेंटा, पेरिनियल लेसरेशन, DIC या यूट्राइन रप्चर. एंड द राइट आंसर इज ए, यूट्राइन एटोनी. यूटेराइन एटोनी. क्वेश्चन 223 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 223 क्या पूछे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन फीमेल. ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ STD in females. Most common cause of STD in females. Option 1, HIV. Option 1, HIV. Option 2, genital herpes. Option 2, genital herpes. Option 3, hepatitis B virus. Option 3, hepatitis B virus. Option 4, gonorrhea. Option 4, gonorrhea. Option 5, क्लैमाइडिया. ऑप्शन 5, क्लैमाइडिया. फिर से देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ STD इन फीमेल, HIV, जेनिटल हर्पेस, HPV, गोनोरिया, क्लैमाइडिया. एंड द राइट आंसर इज ई, क्लैमाइडिया. ई, क्लैमाइडिया. क्वेश्चन नंबर 224 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 224, अ 24-year-old प्राइमी ग्रेविडा with twin presents for ultrasonography at 20-week gestation. Based on the ultrasound findings, the patient is diagnosed with dizygotic twin. Which of the following is true regarding the membrane and placenta of dizygotic twin? तो 24-year प्राइमी, ठीक है ना, with twins, ठीक है, present for ultrasound at 20 week. Present for ultrasound at 20 week. ठीक है ना. तो बोल रहा है डायग्नोसिस, एक मिनट, डायग्नोसिस क्या मिला है? डाइजाइगोटिक ट्विन. इट इज डाइजाइगोटिक ट्विन. तो यहाँ पे क्वेश्चन का पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मेम्ब्रेन एंड प्लेसेंटा ऑफ डाइजाइगोटिक ट्विन. तो ट्रू अबाउट मेम्ब्रेन एंड प्लेसेंटा of dizygotic twin. Option 1, they are dichorionic and monoamniotic only if fetuses are of the same sex. Dichorionic, monoamniotic, ठीक है ना, and fetus of same sex, ठीक है ना. Option 2, they are dichorionic and monoamniotic regardless of sex of children. Dichorionic, monoamniotic regardless of sex. Option 3, they are monochorionic, monoamniotic if they are conjoined twin. Monochorionic, monoamniotic and they are conjoined twins. Option 4, they are dichorionic and diamniotic regardless of sex of the twin. Dichorionic, diamniotic regardless of sex. Option 5, they are monochorionic and diamniotic if they are of the same sex. Monochorionic, diamniotic if they are of same sex. फिर से देखिए, 24-year प्राइमी ग्रेविडा विथ ट्विन present for ultrasound at 20 week. Diagnosis of dizygotic twin. True about membrane placenta of dizygotic twin is dichorionic, monoamniotic if fetus of the same sex. Dichorionic, monoamniotic regardless of sex. Monochorionic, monoamniotic if they are conjoined twins. Dichorionic, diamniotic regardless of sex. And monochorionic, diamniotic if they are of same sex. And the right answer is D. That is dichorionic, diamniotic regardless of sex. They are dichorionic, diamniotic regardless of the sex. ठीक है ना. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.